सनी सर की पिक्चर ने भी बनाया है यार, 500 करोड़ गदर मचा दिया बॉक्स ऑफिस पे। एंड ऐसे ही कुछ हुआ था आज से कई साल पहले, 54 इयर्स बैक टू बी प्रिसाइज, जब धर्म जी ने राजश्री परिवार के साथ पहली बार कुछ किया था। और तब जीवन मृत्यु नाम की फिल्म आई थी 1970 में। 100 हफ्तों तक मैटनी शो अलंकार मुंबई में लगा हुआ था। उसके बाद धर्म सर और राजश्री परिवार जो है उनका वो रिश्ता बड़ा गहरा रहा। सुनील भाई, इसको बिल्कुल गौर से सुनना है आपने। एंड यहां पे अब मैं भारतीय सिनेमा के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स को बुलाने जा रहा हूं और शुरुआत करेंगे कमल कुमार बड़जात्या साहब से और अजीत कुमार बड़जात्या साहब से। सबसे पहले सर, मैं आप दोनों को हम सब की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगा फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन, ग्रेसिंग द स्टेज। और आप यहां पर आए हैं एक बहुत ही खास चीज लेके हम सब के लिए। कमल सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि धर्म सर के साथ जो एसोसिएशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक फिल्म तक नहीं थी, उसके बाद भी आप लोगों ने कोलैबोरेट किया। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। धर्म जी ने बहुत इंस्पायर किया फॉर द फिल्म शोले, और उसकी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया शोले का। एंड प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया वी डिस्ट्रीब्यूटेड द फिल्म एक्सेप्ट ए फ्यू टेरिटरीज, विच इज़ हिस्ट्री एक्चुअली। और धर्म जी ने अपनी फैमिली के लिए पार्टनरशिप की हमारे साथ पंजाब टेरिटरी के लिए, जहाँ पिक्चर सुपर हिट हुई जी। और उस समय सर 27 प्रिंट्स जो होते थे वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो क्लचेस थे बाय द मेन सिनेमा। वो अपने आप को इंजन बोलते थे कि हमारा इंजन है, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। तो हमने कहा कि आपके क्लचेस से हम छूट करके और ये फिल्म रिलीज़ करेंगे इन वन शो, मैटिनी शो। और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री फ्री हो गई फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द सिनेमास। राइट, थैंक यू सो मच ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर, ये मेरा सवाल आपके लिए है। अमृत महोत्सव हमारे देश ने मनाया अभी 76 साल, तो सर राजश्री परिवार को भी हो गए एक तरीके से सिनेमा के जरिए देश की सेवा करते हुए। क्या बोलना चाहेंगे सर? सॉरी, मैं थोड़ा सा जी। Our father established Rajshri in 1947, 15th August 1947. Wow. So अभी 76 years हो गए. Right. और we've been in the field of film distribution, film production and film exhibition. जी. So all the three field we have been, and it's been a long journey, memorable one. Right. And we hope it will further continue. I am sure, sir. With the younger generation. Absolutely. So on that note, इससे पहले कि मैं आपके लिए ना एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज यहाँ पे चलाऊं, if you had to say something about this promising new director here, अवनीश भाई के लिए if you had to say something, what would that be, sir? Young and very enterprising. Yes. And it will have a special appeal for the youngsters. Wow, wow, wow. That's a big thing. एंड सर, आप यहाँ हैं धर्म सर के संग जो कोलैबोरेशन है उसकी हमने बात की, कैसे आपके संग पहली बार उस फिल्म में काम किया था, कोलैबोरेट किया था आपने। तो अब ना मैं आपसे कहूँगा वो स्क्रीन की ओर देखें सर सब लोग, बिकॉज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है। ऑल आइज ऑन दैट स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। रिगार्डिंग दिस प्रोडक्शन मैं पहले कहूँगा कि नज़र ना लगे, चश्मे बद दूर। राजश्री प्रोडक्शन 47 से आई थिंक दे स्टार्टेड, बड़जात्या साहब उन्होंने ये शुरू की और एक से एक खूबसूरत फिल्म दी, एक से एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिया, नए लोगों को लाए, नए अच्छे डायरेक्टर्स को लाए, अच्छे अच्छे हीरो को लाए। मैंने फिल्म जीवन मृत्यु में काम किया था, सत्यन बोस डायरेक्टर थे। बहुत ही अच्छी फिल्म, 100 वीक्स अलंकार पे चली थी। मैं ऐसे ही देख रहा था पिछले दिनों, कुछ यार देखे क्या था इतनी पिक्चर, इट्स रियली सच ए फिल्म। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप एक दफ़ा जाकर जीवन मृत्यु देखिएगा, व्हाट ए मीनिंगफुल फिल्म। और किस सब आर्टिस्ट
ऐसा लगता कि एक्टिंग नहीं कर रहे। तो सनी ने एक दिन मुझे बताया कि पापा अपना राजवीर एक फिल्म कर रहे हैं। मैं कहा, अच्छा। ग्रैंडफादर खुश हो जाता है। किसकी प्रोडक्शन? बोले राजश्री प्रोडक्शन। ओ डन, ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। मैं दुआ करता हूँ अभिनीश, हमारा राजवीर, पलोमा, ये नए जब आते हैं एक्टर्स, मुझे मालूम है जब मैं नया आया था तो क्या क्या अरमान होते हैं। सबके लिए दुआएं देता हूँ, ये बच्चों के लिए, पूरी यूनिट को मैं दुआएं देता हूँ कि फिल्म खूब चले और राजश्री प्रोडक्शन का नाम और दोबारा हो, खूब तरक्की करें। लव यू ऑल। ऐसा लग रहा था चलने ही देते हैं ना, थोड़ा और सुन लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब बिल्कुल वो मौका भी जल्दी आएगा, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ जिनसे मिलने वाले हैं वो इस जनरेशन को अगली जनरेशन तक लेके गए और क्या खूबसूरती से लेकर गए। यहाँ पे मैं बुलाने जा रहा हूं उनको जिन्होंने गदर काट रखा है बॉक्स ऑफिस पे। गिव इट अप फॉर सनी देओल साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड साथ में द वेरी गॉर्जियस एंड ऑफ कोर्स पूनम ढिलन जी, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। मैम कंग्रेचुलेशंस, सनी सर कंग्रेचुलेशंस। एंड अब इससे पहले कि मैं दोनों की बात करूं, यहाँ पे वी हैव टू टॉक अबाउट सोनी महवाल, बिकॉज आप दोनों साथ में मंच पे एक अलग भूमिका में हैं आज। लेकिन व्हेन वी गो बैक टू दोज डेज, द गुड ओल्ड डेज, व्हाट डू यू हैव टू से सर? तब पूनम जी की वो क्या क्या छवि थी दिमाग में, और अभी व्हाट डू यू हैव टू से? हेलो, पहले आप सबको नमस्कार। सोनी महिवाल क्या क्या बोलूं उसके बारे में? सिर्फ अच्छी बात। ये पिक्चर शुरू हुई थी जब मेरी बेताब फिल्म रिलीज हुई थी और मैं अपनी फिल्म का सक्सेस क्या वो भी नहीं देख पाया। मेरे को स्ट्रेट अवे ये लोग रशिया ले गए थे, है ना। उसी वक्त हम लोग भागे थे वहाँ पर एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उस वक्त कि क्या बातें बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने देखी है पिक्चर, बहुत ही प्यारी थी और उसके गाने तो बहुत ही प्यारे थे। अनु ने म्यूज़िक दिया था, बहुत ही प्यारे गाने थे। आज तक आई एम श्योर एवरीबडी इज़ हमिंग देम एंड लिसनिंग टू देम, दो सॉन्ग्स, एंड आई थिंक आई विल नीड लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। अच्छा पूनम मैम, आई गिव यू अ क्वेश्चन। मैं यहाँ पूछ ही लेता हूँ आपसे, व्हाट इज दैट वन थिंग इन दिस जेंटलमैन जो तब से लेके अब तक हर किसी के दिल में और दिमाग में बसे हुए हैं? तब आपने भी वो चीज देखी होगी, आई एम श्योर। व्हाट इज इट? नहीं बोलना नहीं। आई थिंक इन्होंने आफ्टर हिज फादर वो ही मैन की इमेज स्क्रीन पे लेके आए, एंड आई थिंक सोनी महिवाल उनकी एक रोमांटिक टाइप की इमेज में आए थे वो। एंड जैसा आपको याद करा दूं, मैंने कुछ और भी फिल्में की थी उनके साथ, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी और वो सब, बट सोनी महिवाल एक इमॉर्टल लव स्टोरी है वैसे भी, क्योंकि इट्स अ क्लासिक। ऊपर से इट वाज सो ब्यूटिफुली shot and Sunny and me, if I may say so, we suited the roles really well. And I think जहाँ हम जाते हैं अभी भी we are lucky कि सोनी, मेरी सोनी, सोनी अभी भी लोग बजाते हैं। And he is a very very easy co-star to work with. और मैं सनी का ये कहूँगी, I don't know if you know that, introduction to good music सनी ने मुझे दिया है। बहुत साल पहले he was so fond of music, English music and all international music. तब इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलता था इंडिया में, तो हिज कलेक्शन हम लोग सब चुराया करते थे। एंड वी से सनी इसका टेप बना के दो, उस टाइम तो टेप्स होते थे, वी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। एंड वी एक्चुअली ग्रोन टुगेदर इन द इंडस्ट्री एंड अदरवाइज वी ऑल्सो यंग, तो धीरे धीरे, एंड नाउ विद गॉड्स ब्लेसिंग आवर चिल्ड्रन आर कमिंग इन अ फिल्म टुगेदर, एंड प्लीज गिव देम ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड लव लाइक यू गेव अस। थैंक यू सनी सर,
अभी मैं अगर आपसे कहूँ कुछ टिप्स नाउ एट दिस मोमेंट, जब प्रमोशंस की बात होती है, लोगों के संग जाके बातचीत करने की बात होती है, तो व्हाट डू यू, सिनेरियो कैसे चेंज हो गया एंड व्हाट डू यू सी आज के दौर में? मीन्स आप क्या कहना पूछ क्या रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इफ यू हैड टू गिव सम टिप्स, नहीं ऑफ कोर्स यू गॉट इट कमल सर, टिप्स तो मैं कुछ दे नहीं सकता। मेरा बस यही कहता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, कभी कभी कोई गलत बातें भी बोल देता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ। और अभी बच्चे लोगों को बताया जा रहा था कि ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है, तो मेरा बेटा घबराया हुआ था, पापा वो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। मैंने, बेटा तू तेरे दिल में जो आएगा तू बोल देना, और बाकी तो वही बात बोलेगा जो सही बात है। और मेरी आप लोग सबसे बस यही विनती है कि दोनों बच्चे आएंगे जब बात करेंगे, ज़रा ऐसी चीज़ें मत पूछ लेना जहाँ पर वो बेचारे सोचते रहेंगे कि इसका जवाब क्या देना है। एक्चुअली सनी, मैं वही बोल रही थी, हमारे टाइम में हमको ये सब नहीं करना पड़ता था. लाइफ हैज़ चेंज सो ड्रास्टिकली विद प्रमोशन, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दैट. तो it's a very daunting thing for newcomers to face so many of you with your cameras and questions. So be kind and gentle to them. And I'm sure they will learn. In fact, मैं आज किसी को बोल रही थी कि मैं जब अपनी पहली फिल्म देखती हूँ, कि मैंने जब काम किया था त्रिशूल में, I was so gawky, so awkward and so shy. और इन दोनों को मैंने जब फिल्म में देखा है, you don't feel at all they are newcomers. They have done such amazing work, so much confidence. And of course, the credit goes to Avnish also. He's brought out wonderful work from them. And the whole film has been made with so much love and care. And Surajji, thank you for looking after our bachas so well. थैंक यू सो मच मैम. और अब बात हुई है तो मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे सूरज सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. One of our favorite directors of the Indian film industry, ladies and gentlemen. और एक बहुत जाने माने प्रोड्यूसर अशोक जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं. अशोक ठाकरिया साहब हमारे साथ यहाँ पे. It's such a pleasure, sir. Please. And proud fathers, of course. सूरज सर, सबसे पहले यहाँ पे आज not as a director, not as a producer, as a father, if you have to say something, क्या आ रहा है वो पहला थॉट दिमाग में सर? सबसे पहले जो थॉट आ रहा है मुझे ये आ रहा है कि आज माय सन इज हियर एज ए डायरेक्टर. तो मुझे ये हमेशा लगा कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा. कभी मेरे को ध्यान नहीं आया कि सनी जी ही वुड वन डे ही केम एंड ही से ही वांट्स टू बी अ डायरेक्टर. तो फिर मैं चुप रहा. बट फिर मैंने दो ही चीज़ें कही नितिन, जो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि इफ़ यू हैव टू बी अ डायरेक्टर you need to want to say something, तभी डायरेक्टर बनो. So I'm so happy this is a film जहाँ he has had to wanted to say something and he has had his own voice. So Komal ji, that is what I would like to say today. अशोक सर, this one's for you. अभी हम बात भी बाहर कर रहे थे, मैंने सबसे पहले आपसे पूछा नर्वस, आपने कहा नहीं ठीक है, जो हो रहा है सही है, अच्छा है, मजा आ रहा है. So what do you have to say as a father today, sir? Be very honest. Very emotional. To see your own daughter. We are so blessed that first break Rashri में उनको मिला, and our blessings are with them. Thank you so much, sir. Thank you so much. Of course. ये तीसरी जनरेशन है. सूरज सर, मैं चाहूँगा थोड़ा उस बारे में बताइए. From धर्म सर to सनी सर, पूनम मैम, and now यहाँ पे ऑफ कोर्स अवनीश भाई, पलोमा एंड राजवीर. व्हाट डू यू हैव टू से, ये जो पूरा लेगेसी चलती चली आ रही है सर? अभी सर, दिस इज़ ओनली आई कैन ओनली हैव ग्रैटिट्यूड बिकॉज हमें सिर्फ बोला गया कि फिल्म जो है वो हमारा धर्म है, कर्म है, जो मेरे ताऊ जी हमेशा बोलते हैं. तो वही चीज़ जब आप देखते हैं कि पहले राष्ट्रीय की फिल्मों को जो प्यार मिलता है, आज भी मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे हम आपके कौन के नाम से जानते हैं. मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल when you get so much of love, so much of respect. It is only because we have stuck to our values. And like Sunny ji, Poonam ji said, just being simple, just making what we want to make. So this much I can say. जब ये concept अवनीश ने दोनों का सुनाया तो सब्जेक्ट मैंने बोला जो तुम्हें बनाना बनाओ, बस ये देखना कि राष्ट्रीय की ऑडियंस भी आएगी. बस वो उतना ध्यान, कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड मेक योर फिल्म. फिर सनी जी का फ़ोन आया मेरे पास कि
सुना है कि बेटे की पिक्चर लिख बना रहे हो, तो आई राजवीर, आई डोंट नो वेदर यू नो राजवीर अबाउट दिस. सो आई सेड कि हाँ, फर्स्ट थिंग आई सेड, बट सनी जी उसमें एक्शन नहीं है. मैं घबरा गया, मैंने वापस फ़ोन किया, तो फर्स्ट थिंग इज नो, आई वॉन्ट सब्जेक्ट विच माई सन विल लव, विच ही शुड लाइक, एंड इट शुड बी समथिंग फ्रॉम द हार्ट. देन आई रिमेंबर पूनम जी का मैसेज आया टू माई सिस्टर अनुराधा. तो अनुराधा जी ने कहा कि ऐसे पूनम जी ने कहा पलोमा के बारे में. सो पलोमा, फर्स्ट फोटोज केम ऑफ यू विद अ गन. हाँ, एक फोटो थी पूनम जी गन वाली आई कोई. तो फिर बट बोथ मी एंड अवनीश सॉ एंड वी सेड दिस इज मेघना. सो ऐसे ही तब भी ऐसी फिल्में बनी है, अब भी ऐसी फिल्में बनी है, कोई चलती है कोई नहीं चलती है, बट जर्नी हम लोगों ने तब भी एंजॉय की और आज भी बहुत इन बच्चों को देख के वी आर एंजॉइंग. बहुत मेहनत की तीनों बच्चों, मेरे लिए तो तीनों का लॉन्च है आज, और इतने सारे और लाइक. एब्सोल्युटली, तब भी और अब भी की बात कर रहे हैं. एक आखिरी चीज सर, लव स्टोरी के साथ ही आपने भी डेब्यू किया था, और यहां भी वही होने वाला है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ. I can only wish, but 35 years, I also was a newcomer. I also had a hero heroine like this, as nervous. वो भी एक जोश में बनी, ये भी एक जोश में बनी. उसकी भी पहले दिन बारिश ही बारिश थी, हमारी फिल्म में भी बारिश ही बारिश हुई. बस I can only say that all our blessings. We are nervous parents today. That's all. थैंक यू सो मच. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. यहाँ पे वील हैव अ क्विक फोटो ऑप विद द लेजेंड्स. मैं कुछ जी बोलना प्लीज सर, प्लीज. Right. आप लोग राष्ट्रीय प्रोडक्शन में तो जानते ही हैं, हमेशा इन लोगों ने, जैसे डिज्नी फिल्म्स हैं, वो हमेशा एक तरह की फिल्म बनाते हैं जो फैमिलीज़ के लिए होती हैं, एंड दैट्स व्हाट दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग एवर सिंस. कभी बहके नहीं, और ये फिल्म भी उसी तरह से है. आप लोग बोलेंगे इन्होंने फिर से शादी के ऊपर है या उस तरह की है, बिकॉज हमेशा दे ब्रॉट दोज ऑल द फैमिली में वैल्यूज़ क्या होती हैं, शादी कैसे होती है, कैसे लोग पूरे परिवार दूर दूर से आके इकट्ठा होता है और किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, क्या क्या नहीं होता, जहाँ इमोशंस और बच्चे जो दूसरे परिवार ये परिवार से मिलते हैं और पूरे घुलमुल से जाते हैं, और सब तरह की फेस्टिवल्स होती हैं. ये फिल्म भी बेस्ड वहीं है, लेकिन ये फिल्म आज की है, आज की जनरेशन की है, क्योंकि मैंने देखी है. और मैं बस यही कह सकता हूँ, मेरी एक फ़िल्म थी मैंने जो बनाई थी, सोचा ना था, शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी उस वक्त. आई रिमेंबर आई शोन देम ऑल द जर्नलिस्ट दैट टाइम बिकॉज आई वाज सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ नथिंग लेस देन दैट और मे बी मोर, क्योंकि इस फिल्म में हमारे डायरेक्टर साहब ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है. बिकॉज ओवर हियर ही इज़ ब्रॉट आउट द आज की जनरेशन वेडिंग को किस तरह से देखती है और रिलेशंस क्या होते हैं. जैसे लिव इन रिलेशंस होते हैं, पेरेंट्स का होता है, जॉइंट मींस वेडिंग्स करवाते हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं. ये सब चीज़ों को पकड़ के उसने जिस तरह से सब कैरेक्टर्स जितने भी इस फिल्म में हैं, सबको जिस तरह से उसने इकट्ठा किया है, और सबकी अपनी अपनी एक दर्द है या कहानी है, उनका विश्वास है कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, ये वो पूरा इस फिल्म में आता है. तो आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी डीप रूटेड today's youngsters film, and I can vouch for that because I've seen it. So that's what I would like to say. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now it's time to take a look at the trailer. लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा, we'll have a quick photo op. हाँ जी, एक बैठ के और फिर खड़े करके लेते हैं. सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. खड़े रहना जी. अभी रख दो बीच में. इधर से बाबू, बेटा इधर से. कमल Spider. I also saw it. Who was not in a position to do anything. I hope I did. Thank you so much. So please be seated and we'll play the trailer. Hi. आपने गा दिया सर.
Thank you. Thank you so much. Please be seated. And now, ladies and gentlemen, of course, the moment is here. All eyes on the big screen as we play the trailer. Ladies and gentlemen, make some noise. First of all, congratulations to the both of you. वो रुके या नहीं रुके ultimately? Like when you say कि मत जाओ, what happened? आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. देखा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब. 5 अक्टूबर को पिक्चर देखनी पड़ेगी. Give it up for them, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां. This is what you call a dream debut, right? Rajveer, your views on this. And when you know we saw you with your father, Sunny sir के साथ, आप उनके साथ चल रहे थे कंधे से कंधा मिला के. आज when he's sitting there और आप यहाँ स्टेज पे खड़े हो as this super lead actor, क्या बोलना चाहोगे? I feel really confident with Dad being here and also very nervous. Yeah. Paloma, for you, you know the family is here, the entire media is here. Already इतनी buzz हो चुकी है इसको लेके कि दोनों कमाल के हैं. What do you have to say? We're very excited and we've been looking forward to this moment for quite some time now, and I hope that you guys enjoy our film. And Avnish, Rajveer and I have worked really hard and with a lot of passion we have created this film, so I hope that you guys accept us and like our work. We have a lot of questions आप दोनों के लिए, लेकिन उससे पहले कप्तान साहब, of course, Avnish Suraj Barjatia, ladies and gentlemen, the director of this movie is here with us. Of course, जोरदार तालियां बनती हैं. Welcome, congratulations. Please. They don't prepare you for this. Okay, Avnish, उसको सोकिन कर लीजिए पहले पूरे माहौल को, और अब मैं पूछूंगा उनका ड्रीम डेब्यू एट द सेम टाइम, यू नो, इतना सारा प्यार आपके लिए. एंड एज आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ दोनों को लेके पहले दिन से, पहले लुक से. हाउ इज इट फॉर यू? लाइक क्या क्या चल रहा है दिमाग में? It's honestly incredible. I don't think that any of us thought this would happen. You just dream of making, for me personally, you dream of making a film. एक पिक्चर बनानी है, बस मन से बनानी है. And to get this kind of a stage to show it to the world, what more could we have asked for? Just very, very grateful, so happy, and to have such stalwarts at the trailer launch. Of course, families, also from the media. I mean, we've all grown up watching and reading. Couldn't have asked for anything more. हाथ थोड़े कांप रहे हैं. जहां तक पूछने की बात है, I'm sure आप लोगों के पास बड़े सारे सवाल हैं. So अब it's over to you. Can we quickly have the chairs? We all liked it, right? We all loved it, right? We can make some more noise for this amazing trio here. Yes, that's what I'm talking about. Please. Come. He's getting come to him. Okay, जी. So it's over to you. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? मेरे पास से आ रहा है पहला सवाल. जी बिल्कुल. राइट में आपके. नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ नवभारत टाइम से. अवनीश, पलोमा, राजवीर, मैं आपको तीनों को, सूरज जी को, सनी जी को, पूरी टीम को बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगी. बहुत सारी शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगी. जी अवनीश, मेरा सवाल आपसे है. आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं भी किसी न किसी तरह आपके परिवार से कनेक्टेड हूँ. जो सूरज जी की फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसके सारे गाने, मतलब उसके काफ़ी गाने जो थे, मेरे फादर इन लॉ असद भोपाली साहब ने लिखे थे. जी, मतलब जिसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था. तो वो एक लव स्टोरी थी और राजश्री की एक परंपरा है
जो प्यार को, रिश्तों को, संस्कृति को, परिवार को जिस तरह से दिखाने की, तो मैंने प्यार किया में एक डायलॉग था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते जी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों में ऐसा क्या है जो एक होता है ना कि एक प्यार को, क्योंकि ये बात अभी सूरज जी भी कह रहे थे, सनी जी भी कह रहे थे, सभी जानते हैं कि प्यार जो है अब वो एक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया है। पहले हम कहते थे कि हम मोहब्बत में पड़े हैं, इश्क में पड़े हैं, लेकिन अब लड़का लड़की कहते हैं कि नहीं यार मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो आपने तब से लेके मैंने प्यार किया से लेके दोनों तक प्यार को कितना इवॉल्व या प्यार को किस अलग ढंग से पेश किया है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। नहीं मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड आई मीन असद भोपाली जी तो इज़ such a legend. It was our honor at Rajshri to, I mean, मैं पैदा नहीं था उस वक्त, but it was, I mean, his songs are still celebrated today. Ma'am, regarding love, you know, love is a very complicated thing. उस वक्त भी complicated ही था, इसलिए I think it connected with everyone in their own way. मैंने प्यार की देखता हूँ, बेताब देखता हूँ, so I still connect with those emotions even today, even though, like I said, I was not born at that time. So love has, I think, transcended time, has transcended all boundaries. And ma'am, Dono is also a love story. It also talks about the complications of love. You know, आज ये ज़माना आ गया है that today we as individuals have the ability to make decisions which maybe us, you know, our earlier generations were not able to. But बहुत बार ना हमारे खुद की जो अंदर की ये demons होते हैं, they start to talk, they start to act as roadblocks rather than पहले जो होता था मुगल आज़म के टाइम से. So ma'am, this film is about the complications that love can give and also the strength that love can give. And we've just tried to go about it and tell a story about love in different ways. You know, जैसे हमारे ट्रेलर में दिखाया गया है, love happens multiple times in life sometimes, and sometimes you need closure, sometimes you have to move on. And this is the story of two people. इन दोनों की अलग अलग प्रेम कहानियाँ हैं, किस तरह ये दोनों कहानियाँ आके जुड़ जाती हैं. That's what Dono is about. Hi, straight here. So I have a question. I think a lot of people will agree today, like you said, and like you've beautifully portrayed. All of us are having issues with love and relationships. And the biggest issue is to deal with moving on. Closure is something that we often don't give so much importance to, but it's possibly the most important thing to move on to another chapter, like you've said. In real life, has it ever been difficult for you guys to move on from anything and find closure? I think all of us find closure in our own time and space. It just hits you randomly and it gradually, you learn from it. And I mean, every second, no matter how old you are, there's a closure that you chase for something that you feel complete for. And this movie really, really talks about that. And it shows the character's journey that I portray in the movie that I'm so blessed to be. So yeah, closure is something, you can't really describe it. It's a feeling. And once it hits you, you feel like you found the final piece to the puzzle. And you can see the whole picture and you go like, what an idiot. I was such an idiot. Anybody else? I don't think we could give a better answer than that. Yeah. No. That's pretty much it. Closure is such an important concept. I don't think it gets talked about enough. That's why when we were working on this subject, you know, we thought that it could be something that could be a special story, and you know, we could really do justice to this aspect of it. It's an important thing which doesn't get talked about a lot. I hope after this film, someone might pick up something from here, and it might help someone. Hi, this is Sohail over here from Ancient Bollywood. Avnish, you, Paloma, and Rajveer and the entire family and the team, a big congratulations, you know. The trailer is superb. You're looking very, you know, raw, कह सकते हैं हम, और बहुत ही natural लग रहे हैं. जैसे लग रहा है कि, you know, we can relate, like, ऐसे at one point of time कि हाँ, ये हमारे साथ या कभी हुआ था या किसी के साथ हो रहा है. अवनीश, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि जो बरजात्या फैमिली राजश्री की तरफ से जहाँ पर भी जो कल्चर को हमने बहुत मतलब तवज्जो देते हैं, पर आज की टाइम की जो लव स्टोरी है, तो कभी आपने आपके पापा से कहा था कि थोड़ी सी लिबर्टी, यू नो, आज के वक्त की स्टोरी, या कभी राजवीर या पलोमा ने कहा होगा नहीं इस तरह से थोड़ा होना चाहिए,
तो कुछ लिबर्टी आपने ली है? It's a very loaded question. नहीं नहीं नहीं. To be very honest, like my father said earlier, यही बोला था कि make a film that's you. What you think about love, what you think about relationships, and what you think about family. Rajshri has always made films. This I've heard from my seniors. Rajshri has always made films which my great grandfather had said कि a film that I can see with my in-laws, with my elders. And I honestly believe कि आज जो मैं film अपने in-laws या अपने family के साथ देख सकता हूँ, I feel it's more progressive today. And I can see and talk about things that maybe my grandfather, my great grandfather couldn't discuss with his relatives. And that's honestly what this film is. It's a Rajshri film. I come from the Rajshri family. I don't think I can take that away from how I view the world. So to answer the question, it is today's story. But like I said, love transcends. It's been the same throughout. So there's some person who's pining for someone who needs closure. ये बरसों से हम देख ही रहे हैं. That's honestly. I wanted to talk about Avnish, since you had asked him that question. He's so open-minded, honestly. I felt, even though he's been so thorough with his work, he was so prepared in every category, whether it was his sound or whether it was editing or whether it was on flaws. But he was still so open-minded in general to take in any kind of creative collaboration. And it was so much fun working with him. So thank you for trusting me with Meghna, honestly, and giving me that chance. Hi, Paloma. What was the question again? It was long answers. Yeah. Honestly, when I first heard the script, it was very fresh. It was extremely fresh. And Avnish was writing the script for about 4 years. So anything I would ask, he already had a counter to, because he must have thought about it like year 1 or year 2. So I felt stupid butting it. I'm like, this guy has done all his homework. And I had full faith and trust in him. Hi, Paloma. Avnish, Rajveer, I have an Paloma. answer. Hi. Paloma, your mother, when she started with Noori, and from there to in her entire career, she has probably done one of the most iconic romantic roles. When you are picking up a film which is a romance, are you scared that you will be drawing comparisons, probably one of the best performers you had in-house itself? I think it's natural. Comparisons are inevitable, definitely, when you're from such lineage. I think as newcomers, and we're all newcomers here, we can only hope that people like our work, people accept us, and we get more chances to prove ourselves. And I hope that we get the same love that our parents have gotten and, his family have gotten for years. I mean, eventually we will probably have to create our own identity, and I hope that happens. Rajveer, Paloma, and Avnish here on the right. यहाँ पे Simran Singh here. बहुत स्वागत and congratulations to you guys and to your parents. This looks really promising and relatable. मेरा सवाल राजवीर पहले आपसे फिर अवनीश आपसे भी है. राजवीर, मेरा सवाल ये है कि हमने जो लव स्टोरी देखी है तो एक बेताब राजवीर मैंने कहीं ना कहीं अर्जुन तो देखा है. तो वही, so was there a deliberate attempt कि you want to start with a love story, because everyone will be like यार देओल family दा है तो फिर action picture तो आना चाहिए. First perception is that I'll be beating up people and screaming. But when I heard the script, this was a character that I felt like was a character and not a hero. I felt like he was an individual I could really sink my teeth into, and I thought I could really, my skeleton was perfect to fit in his skin. So it was without a doubt. I don't really plan things, what movies I want to do. If I hear a script or a character I really like, and I was so lucky that I got to hear this, and I'm just really blessed and lucky that this script came to me. अवनीश, आपसे सवाल ये बनता है कि अभी आपके फादर साहब ने कहा कि जब ये मेरे पास आए तो मुझे लगा वो ये कहना चाहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. So अगर आप थोड़ा बता सके, when was the time when you actually found your interest in directing and you got inclined towards directing films and telling stories, taking forward the legacy of Rajshri production? अगर आप इसके बारे में कुछ कह सके तो.
जी जी बिल्कुल एज अ किड आई मीन आई वाज मेरे ग्रैंडफादर रहे नहीं अभी राज बाबू बट आई वाज ही वाज माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग ही वाज फिल्म प्रोड्यूसर लॉट ऑफ पीपल माइट रिमेंबर हिम आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम विथ हिम तो उनके साथ रह कर थोड़ा ये भी एंड ही यूज्ड टू टेक अस एवरीवेयर माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे व्हेन वी वर वेरी यंग वी बिकेम हिज लाइफ माय ब्रदर एंड आई ऑल थ्री ऑफ अस एंड ही वुड टेक अस एवरीवेयर तो ये हो गया बाबा जी की तरह फिल्म प्रोड्यूसर बनेंगे सो देन माई फादर सेड ठीक है चलो देन यू वांट टू बी फिल्म प्रोड्यूसर बाबू जी हैं दादाजी हैं यहाँ पे तो सीए करो अच्छा ही है बट आई डोंट नो यू नो एज यू ग्रो ओल्डर यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट सिनेमा एज मोर देन कॉमर्स यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट सिनेमा फॉर द इंट्रिकेसीज ऑफ स्टोरी कि एक सीन के बाद ये सीन क्यों आया इस डायलॉग के बाद ये डायलॉग क्यों आया इस मोमेंट के बाद ये मोमेंट क्यों आया एंड आई जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दैट यू नो एज आई वाज ग्रोइंग ओल्डर So when I went to my father, finally he said, "अरे भाई ये कहाँ से आ गया यार?" But no. So that's where it actually changed for me. You know, you start to appreciate art, cinema as an art rather than business, and that's honestly what inspired me so much. Hi, Rajveer, Paloma और मिस्टर बरजात्या। हाँ, आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय मिश्रा हूँ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से और ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि आज आपकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। मैं राजवीर आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपकी दादी मम्मी और धर्म जी ने क्या कहा आपसे? वो ऑब्वियसली बहुत खुश थे दे टोल्ड मी राजवीर जस्ट बी योरसेल्फ you're blessed with a good personality and so yeah, they said just be yourself, don't try putting on a front, don't look at your dad's image or try to be him or your grandfather's or your chachas, just because you were raised well and just be yourself and natural. Hi, to your left. Hi, my name is Sonal from CNN News 18. My question is for Rajveer and Paloma. You know, when was the first time you all thought that you all wanted to be in front of the camera? And, you know, what was the reaction in Rajveer's case from Sunny sir and in Paloma in your case when you went up to Poonam ma'am and told, and was there anything that they spoke to you about being in this industry? Growing up in a film background and everyone acting and you thought this is how you got the bread home. You thought that this is normal. Everyone does this. When you grow up, you realize, nah, this is weird. This is very unique. So I was always influenced by movies. I always loved acting. I used to get a really good joy. I feel like you could really disguise yourself with a character because it's hard to be yourself. The advice they've given me is just work hard, work on your craft, because don't try to be a star, try be an actor first. Your characters will make you a star. So that's what I do from here, put my eyes down and I just work on my craft. Hello. Paloma, पद्मा जी से answer for the same question. हेलो मेरा नाम पद्मा जी से है एक मिनट मैम मैं आ रहा हूँ आपके पास I'll come जी Paloma you'd like to add something? Yeah, I think I'm very lucky because my parents have been damn supportive of anything that I do ever since I was a kid. Whatever hobbies I had, they would always encourage me to take some class, or, you know, even if it's painting, for example, during lockdown, mom would buy me paints and canvases to encourage my hobbies and all of that. So when I did decide to tell them that I'm very serious about this profession, I don't think they expected it. But obviously they expressed how difficult this line is and how much goes into, you know, into this craft and profession. But I hope I'm making them proud right now, and they've been they were like, I don't know how to explain. I get really emotional talking about how close we are. I'm sorry. हेलो पलोमा जी आरती सक्सेना मेरा सवाल आपसे है कि पहले प्यार और ब्यूटी को भोलापन से मतलब जैसे प्यार है तो उसको इनोसेंसी में माना जाता था और ब्यूटी को भी इनोसेंसी में माना जाता था। आज के टाइम में प्यार को रिलेशनशिप और इंटेलिजेंसी भी माना जाता है। तो आप मतलब जो अब हीरोइन बन के आ रही हैं तो आप अपनी मम्मी से कितनी डिफरेंट है? आपकी मम्मी ब्यूटीफुल भोली भाली थी तो आप उनसे कितनी डिफरेंट हैं? You know, that's so true about mom. Actually, in every film I have
been in awe of her presence and her performances. She just charms up the screen, honestly, with her purity and positiveness, I think. What was the last part of the question? Sorry. ब्यूटीफुल और भोली भाली थी। हाँ जी। तो आप कैसे अपने आप को मतलब पेश करेंगे फिल्मों में? I think, I hope कि मेरा काम speaks for itself, honestly, and I hope कि मेरा खुद का identity eventually आ जाएगा। मैं उतने I can only hope for that. और बाकी आरती जी बंदूक वाली फोटो तो गई थी, सर ने बताया, पता ही है आपको जी। और राजवीर जी से सवाल है कि मतलब सनी जी ने जब शुरू किया था तो लव स्टोरी से शुरू किया, लेकिन उनकी जो इमेज थी वो एक्शन वाली थी। कुछ कुछ आप भी वैसे ही लग रहे हैं, तो तो मतलब आपका भोला भाला ही चेहरा है, लेकिन एक्शन है और लव कर रहे हैं, तो ये मतलब कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी? I guess I'll be yelling soon. Watching Dad, उनके सारे movies growing up, honestly, I just always wanted to beat evil and free the innocence from evil people. I actually wanted to join the army also after watching Dad's movie, because he used to just get me so charged up. I guess it's just in my bones and blood, and I couldn't escape it even if I tried a romantic movie. I guess it's just there. और डांस भी आप सनी जी जितना ही करते हैं? अच्छा। I worked hard on the dance and I was very carefree, and I hope I become number 2 in the family. Avnish, yeah, on your left, yes, yeah. Avnish, Nitin introduced as Avnish Suraj Barjatia. Does the enormity hit you that Suraj Barjatia's son is making his debut as a director after 35 years? Does the enormity of Suraj Barjatia's son hit you? Honestly, very honestly, I don't think there's any pressure. But what it is, it's a responsibility. I think it's very important that that we made a film which lives up to the name and the legacy of not just my father, but also Sunny sir, Poonam ji, the Rajshri, and the Rajshri brand. That responsibility was always there in the back of our head. We can't take this opportunity lightly. We have to make a good film. We have to make a film that we can be proud of, that they can all be proud of. Hi, Rajveer. Over here, straight, towards your left. Hi. Standing over here. Rajveer, when Sunny ji had debuted, everybody expected him to continue the legacy of what Dharamji had built, which was the action, macho man, he-man, avatar, and he did it splendidly. But those days, the audience kind of expected that. Do you think so now for the audience to wholeheartedly embrace a star kid, it's more important for you all to carve your own niche rather than continue that same legacy? Then you all get better acceptance? I agree with that. I think it's important to have your own individual stamp on this industry. Otherwise, they just expect you to follow your dad's traits, your grandfather's traits. So yeah, that's why I really like the subject when Avnish narrated it to me, because it was so different to what people would expect me to choose. They would choose to beat 100 people up, scream and have a big body and everything. But unfortunately, I was in love with the craft. I just loved acting. So I noticed if I get typecasted in that, it's not a good idea for my first movie. So I think it's very important to have your own individual stamp in this industry. Yeah, hello. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. जिस तरह से राजवीर आपके लिए एक सवाल है, जिस तरह से अवनीश जी के बारे में सूरज जी ने कहा कि वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंट शायद बनना चाहते थे, तो राजवीर इसके आपका किस तरह से रहा इसके बारे में अगर बात करें कि एक्टर ही बनना था या फिर कुछ और आपको कहीं जाना था, अगर बात करें? Honestly, my parents hated the fact of becoming an actor. They always wished that I should have studied or done something else in this life, because this line is so unpredictable. You're happy for 1 second, you're miserable, getting work. I mean, Dad got a hit after 22 years. So they were worried how such a mentally draining line. And unfortunately, I just fell in love with acting. I just couldn't get enough of it. So yeah, even now they wish if I did something else and not this. Rajveer on your left. Hi.
राजवीर, आपका फेवरेट हीरो कौन है जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, जिनकी फिल्में आप बहुत देखते हैं? Growing up, तो पापा थे, and even now, I mean, no one can do what he does. There are a lot of actors that also inspired me from Hollywood, from India. I mean, I suck at lists because I just always draw a blank. Like today, this person inspired me. Last week, it was someone else. I just suck at making lists. So कभी ऐसा कोई दिन आ गया आपके पापा की गदर 3 और आप दोनों की कोई फिल्में साथ में आ गई सिनेमा में, तो वो कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे? If there's a good script, then I won't have no pressure. It'll be awesome. You'll see me yelling as well. ग्रेट. पलोमा जी, आपका फेवरेट हीरो मेल फीमेल जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड, जिनकी आप बहुत फिल्में देखती हैं, ऑन योर लेफ्ट. हाय. Say I get inspired, you said? Yes. I think I liked what Rajveer said a lot, yeah, that your inspiration keeps changing all the time. You know, you can be inspired by everybody in some way. All right, we'll take 2 more questions. Hi, Rajveer. Hi. Here. So the trailer is beautiful, and so as we saw in the trailer, it says that it talks about a special destination. So I would like to ask all 3 of you that what is a special destination for you guys? My nanny's house. Can't get enough of it. Rajveer, either side. Rajveer, you've been thrown out to the world now. How would you take the challenges and make it into opportunities? I think it's important to work on yourself non-stop. You're always learning something. And you can't avoid mistakes because we never made any. So you'll never know what a mistake is till you make one. And for opportunities, I think your work speaks for yourself. If I'm good and consistent in my work, opportunities will be created. That's all secondary, I think. I think you should really work on your craft. Because right now I may look good, but if I'm 60 and 70 and I'm old, I got to better be a good actor because looks just don't carry you. It's your craft. So yeah, that's what I would say. I would say work creates opportunity. Your work will create opportunity if you're good. Avnish, Rajveer is always known, on your left, yeah. Rajveer is always known for his music actually, no? तो आपके पर भी कितना प्रेशर था कि एक स्टोरी तो अच्छी कहनी है, इसके साथ साथ म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देना है, और शंकर एहसान लॉय लाइक मतलब आपने उनको क्यों चुना एक्चुअली? व्हाट वाज इट लाइक फर्स्ट टाइम था? जी नहीं बिल्कुल, दिस वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी अ लवली म्यूजिकल फिल्म. हमारे 8 गाने हैं इस फिल्म में, एंड इट वाज वंडरफुल टू वर्क विद शंकर एहसान लॉय. एहसान सर इज हियर, एंड इरशाद कामिल जी. I was very blessed to work with them, and they've given us an outstanding album. Iska title song is already becoming popular. Arman is here. He sung it so well for us, and I really hope that everyone loves the album and appreciates it. Well, अभी पादुकोण साहब भी म्यूजिक की बात कर रहे थे यहाँ पे, so मैं गुजारिश करूँगा, अरमान is here, so why not? Let's have him up on stage, ladies and gentlemen. Dono, the title track, इतना सारा प्यार, organically it has grown and become massive. So Arman, congratulations and thank you for the lovely track one more time. Yes. So क्योंकि मैंने कहा ना एक और सरप्राइज है, थोड़ा सा रिवर्ब दे देना मुझे. अरमान, before we सिंगिंग के वक्त, हाँ, before we ask you about the song, जो कि जैसा मैंने कहा massive हो गया है, you have to tell us about these 2 wonderful people here, because I believe you all are childhood buddies. I have to, मैंने ये कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन राजवीर और पलोमा मेरे चाइल्डहुड दोस्त हैं. हम तीनों ने, दोनों नाम मूवी का है, लेकिन हम तीनों ने we've seen life together, we've grown up together, and I think इसे cosmic conspiracy कह सकते हैं, that we all here together on the same stage and I've sung the title song of that debut movie. I couldn't be prouder. मुझे बहुत खुशी हो रही है, and I can't wait for all of you guys to watch the movie, love the album and give them all your love.
एंड अभी देखो हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली है ना, बहुत स्वीट बातें कर ली. हाँ. नाउ गिव अस सम गॉसिप. थोड़ा सा बताओ कि मतलब आधे लाइक इतना ही शांत या वो. अरे हम लोग बहुत इनोसेंट लोग यार, कोई गॉस वॉस नहीं है हम लोग के बीच में. आप लोग क्रिएट मत कर देना बस, वो एक हमने क्या डिसाइड किया था बाहर, आप हमको मसाला देने वाले हो, आपने पलटी मार दी. नहीं नहीं, मेरा मसाला सिर्फ अच्छा गाना गाना होता है बस, दैट इज ऑल. तो हो जाए दोनों का टाइटल ट्रैक फॉर ऑल ऑफ अस. आई वुड लव टू सिंग दैट फॉर ऑल Let's ऑफ यू. hear it. Oh, we can make some noise for Arman Malik, ladies and gentlemen. Yes. Sorry, lyrics याद नहीं है तो I'm just gonna look at it. है कोई ख्वाब या खुशी जो साथ है अब मेरे, बोलूं ये कैसे. तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे. बातें होठों पे ठहर सी गई, बातें राहों में बिखर सी गई. तू दिल की बात जान ले, ये बोल दे तुम मेरे, बोलूं ये कैसे. तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे. मेरी खामोशी को जान ले, काम तेरे बिन मेरा ना चले. हो तुम और मैं दोनों दोनों दोनों, और सफर तुम और मैं दोनों दोनों दोनों. राहें तन्हा तन्हा सी, दिल है बहका बहका सा, लेके आई है सुबह जैसे इश्क की हवा. मैंने ऐसे ही जीना है, मतलब के तुम हो मेरी. वो लवली लवली. एंड यहाँ पे generations की बात हो रही है ना, we are talking about generations and that talent. तो सर, नोटेड म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर मलिक साहब हमारे साथ. सर अभी आप बड़े गौर से देख रहे थे, व्हाट डू यू हैव टू से यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? वी हैव टू टेक योर व्यूज ऑन दैट. You know, actually, this is a very exciting moment. I just want to share with Avnish that 35 years of my life I have spent going in and out of Rajveer Productions, and today Arman fulfills that dream. And I love this song very much. Rajveer, I love you so much. Can't express further. Paloma, God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Arman, for that wonderful song. Would request you to be seated. Before I leave, I just want to give a huge thank you to Shankar Ehsan Loy, sir. Ehsan sir is right here. I can't see him. He's right there. Lots of love to you, sir, and lots of love to Irshad Kamil, sir, as well, for giving such a beautiful album. I think music and movies go hand in hand, and I'm so glad that I could be a part of this beautiful album. And thank you, Avnish, for trusting me for this movie, because you know it's always tricky casting a voice for debutants, and I'm glad I could suit Rajveer on screen. Thank you so much. Thank you so much. A big round of applause for Arman Malik, ladies and gentlemen. And now would like to invite on stage one more time Sunny Deol sir, ladies and gentlemen. Poonam, Dhillon ma'am, one more time. Suraj sir and Ashok sir, एक बार वापस से मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग यहाँ पर आएं, because I'm sure ये सरप्राइज मैं अगेन आप लोगों को दे रहा हूँ. I'm sure आप लोगों के पास कुछ सवाल होंगे. If just in case you want to ask something हमारे legend से, so you can do that. जी quickly, कहाँ से? Yes. We'll just take a couple of questions. हाँ? Sir का mic on करो. हेलो जी. आई. हेलो, मेरा सवाल सनी सर से है. सनी सर, इस तरफ. इधर सर, आपके लेफ्ट में सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सर, आपकी गदर 2 वाकई में बड़ा ही धमाल मचा रही है. हर कोई आपको ऑन स्क्रीन जब एक्शन करते हुए देखता है ना, पागल हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. क्या आप चाहेंगे कि आपका जो बेटा है वो भी आगे चलकर इस तरह की मूवी करे? देखिए, मैंने जो करना था किया, पापा ने जो करना था किया, अब इनकी बारी है, जो करना है करेंगे. जी, थैंक यू सो मच. सिमरन. हाँ जी, आप दोनों से सवाल है.
आप जब अपने बच्चों को अभी देखते हैं जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली उन्होंने जवाब दिया, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? मतलब फर्स्ट टाइम फेसिंग द मीडिया बट द क्वेश्चंस दे वर वेल प्रिपेयर्ड, द कॉन्फिडेंस वाज देयर. I don't think they were well prepared. They just came here and you'll ask them the right questions and they answered them rightly. That's what it was. Well, I definitely do think that today's children are way much more aware than we were, and they work way harder than we did. सनी, आपने बेताब में इतना काम किया था? मुझे लगता है जितना काम मैं पलोमा को देखती हूँ करते, I feel we didn't work half as hard. Over there, we didn't have to do all this. That's why. They really work hard on themselves. I must say that. So I appreciate that a lot. 2 more questions and Sunny, yes. Sunny, this side on the right. ਲਿਪਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੰਗਣ ਡਈ ਆ नहीं मैं इंटरव्यू जरूर दवांगा मैं कि पिछे इन्ना दौड़ रहा सी नट रहा सी चारों तरफ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ no very nice we have ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ no I'll definitely do it I'll definitely supported you and now my question is you know कि you're throwing out your son आप बहुत throw out to the world throwing out to the world of glitz and glamour मैंने आप लोगों के हाथ में दिया है मेरा बच्चा उसको जरा प्यार से लेके रखिए yeah so what are your expectations especially in this glitz and glamour world you know so we all expect our kids to do great and they will always do great and whatever they do we'll always be proud of them because they are your kids and they'll always make you proud and I'm very happy. Thank you so much, Lipika ma'am. One last question. वहाँ से जी पूछिए. Hello. जी पूछिए मैम बहुत Hello, देर से आप. all dignitaries on Yes, the dais. Heartiest congratulations to all of you, especially Deol family and Rajeshri Productions. This is your 76th year of Rajeshri Productions. So my question is to Avnish, Paloma, and Rajveer. How much pressure you three of are feeling because this is your debutant project? And what are that one quality that you have inherited from your legendary parents? जैसे मैंने कहा मैम कि it's no pressure at all, just a responsibility, that's all. We have to make a good film, we have to do them proud, that's all. Paloma, what have you learned from Poonam ji? Beauty, glamour and talent. And Rajveer, you too say something about the parents. What have you learned from them? Is this on? Yeah? Okay. You know, the qualities that I have imbibed from both my parents, my entire family actually, they're very deep rooted. I think the principles that my parents have instilled in me will hopefully, I want to be a part of who I am for the rest of my life. And work hard, be happy, enjoy your work, and yeah, I think Sunny those are sir, a few things. this side. Sunny sir. Okay, sorry. नहीं कोई बात नहीं सब ठीक है ऐसा कोई नाराजगी नहीं है जी. वन लास्ट क्वेश्चन रेखा जी आप पूछ रहे हैं कौन पूछ मैं सूरज जी कोई बात नहीं मैं लड़ाई नहीं करनी है हमने लड़ना नहीं है सब बढ़िया. सूरज जी मेरा सवाल आपसे है आपकी राइट रेखा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास. नहीं मैं हूँ. नहीं मैं आ रहा हूँ जी. राजवीर आप बताएं. Yes, ma'am. I apologize. What Dad has taught me is dedication and determination. I mean, he has the strongest back ever. He carries our whole life on his back. And to never give up and work hard. And as I said, you don't focus on becoming a superstar. You don't focus on becoming an idol. All you focus is on your work. And if you make it, you make it. Even if you don't make it, you got to keep trying and going ahead, no matter how rough it might be. That's what Dad has taught me. Thank you so much. जी सूरज जी मेरा सवाल आपसे है आप कैसा आप एक पिता भी हैं लेकिन साथ में आप एक बहुत ही जिम्मेदार फिल्म मेकर भी हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि अवनीश जो है आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं. एक पिता को अपनी विरासत पुत्र को सौंपनी ही पड़ती है लेकिन इस वक्त आपके मन में क्या हलचल है कि वो परंपरा तो सही हाथों में है लेकिन आगे भविष्य आप कैसे देख रहे हैं. जी भविष्य तो हम लोग
जितने हैं हम लोग तब भी खुश होते अगर ये बच्चे एजुकेशन चुनते, मेडिसिन चुनते, इन्होंने फिल्म्स चुना तो एक अलग ही प्राइड है। और भविष्य तो सिर्फ मेहनत पे डिटरमिन करता है, क्योंकि मेहनत आप इसको रोज़ी रोटी माने, क्योंकि ये यही चीज़ इतनी इतनी दुआएं मिलती है। मैंने तो यही बोला अवनीश को कि जब प्यार मिलता है लोगों से तो बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है उसका। वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल एंड फुल ऑफ वैल्यू, मतलब वी मस्ट गिव इट फुल वैल्यू। बाकी आज जो मुझे महसूस हो रहा है तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, महावीर जैन जी यहाँ बैठे हैं, एंड जियो से द टीम इज़ हियर एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ज्योति जी टू ट्रस्ट a film with newcomers, trust a vision of a young man, and to trust the story, trust this whole project. So I'm very grateful she couldn't come here, Jyoti ji. Baki, I'm very grateful for Poonam ji, Ashok ji for trusting the daughter to us. For me, it is 3 children being launched. And I have to say, Karan, I like to say, मैं हमेशा सुनता था ना बॉबी जी से कि सनी जी जैसा कोई बड़ा भाई नहीं। मतलब ऑनेस्टली ड्यूरिंग दिस लास्ट 2 years 3 years 2 बार पोस्टपोन है हमारी पिक्चर। मैं भागा हूँ सनी जी के पास, मैंने कहा सनी जी कैसे करें, एंड द कॉन्फिडेंस ही गेव टू अस। आई एम सनी जी, आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक ऐसा हमेशा एक मिला है कि नहीं बनाएंगे पिक्चर, अच्छी बनाएंगे। सो थैंक यू सनी जी। एंड लास्टली आई रिमेंबर माई फादर कोमल जी, दिस इज आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट 2019 ही वॉज नॉट वेल, वी वर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल एंड हिज लास्ट वर्ड्स टू मी वर that इसकी फिल्म अच्छी तरह से बनाना। So everyone here, the technicians, Kanika, Rohan, everyone, Manik, and all the technicians here, they've all helped in spite of COVID, in spite of all the, just that one dream कि एक अच्छी फिल्म बने। So that is what I'd like to say today. Sunny sir, Poonam ma'am, towards your left, right here, standing over here. सनी सा, पूनम मैम, सबसे पहले बहुत बधाई हो आप दोनों को। आई एम श्योर यू ऑल आर फीलिंग वेरी वेरी प्राउड टुडे। यू ऑल हैव डन सम ग्रेट फिल्म्स टुगेदर, सवारी वाली गाड़ी, समुंदर, cult film Soni Mahiwal. When you all saw Rajveer and Paloma on the screen, did that reignite memories of the stuff you all did together? Did that bring back a lot of memories? I have been watching Paloma for quite some time while they've been working, and I've seen them on the screen. I've seen the film earlier also. Memories तो आदमी इस वक्त तो बस यही अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि इनको देखता है, and the way they are performing over there, you start डर लगता है, और जब अच्छा काम करते हैं लग रहा है अच्छा हो रहा है, suddenly that dirt turns into pride, and then it gets into joy, and you get confident, and that's what I'm feeling right now. Poonam ji. I would say that I was so happy that they were coming together after Sunny and me did such amazing films together, and people did like us on screen a lot. So I'm sure that same, and they do look very good together on screen and otherwise too. So I'm so happy with the pairing, because that's half the battle won. You know, when you look good on screen together and you complement each other. In fact, एक मुझे इनसे गिला है, मैंने एक सनी की और मेरी तस्वीर इन्हें दी थी when they were shooting outdoor in Maldives. I said, can you all create this picture so we can use it? इन्होंने 1 महीने में नहीं ली वो तस्वीर. So I'm like, okay guys, this much we can do. सोनी माहिवाल की एक तस्वीर थी. I was hoping that recreate that for us. But I'll still make them do. I'm also not going to give up. बाकी 5th October को we'll get to see on the big screen the magic. I know बड़े सारे सवाल हैं, but वक्त की भी बात होती है, तो thank you so much ladies and gentlemen for being amazing. Give it up for this amazing team one more time. माफी चाहूंगा जिनके सवाल नहीं ले सका. We'll have a quick photo and Avnish. Karan, of course, Karan, we want you up on. No, you have to come here. Come, beta. We'll have a quick family picture. Anmol, come please, come beta. And after this, we'll have Avnish invite the cast and the crew, the remaining cast and the crew of the movie. Thank you so much for being so amazing. And हाँ कोई नहीं, मैं तो बस थैंक यू तो कह दूँ ना आप लोगों को.
अच्छा काम कर रहे हो, इतना सब मजा आ रहा है ना? मैं नहीं कर रहा था कुछ इंतजार। अवनीश जी। One final thing, sorry. One final thing. Film is not made just by me. It's been made by the entire team. It's always been a Rajshri tradition to acknowledge and to thank all the lovely people who made the film with me. I'd like to invite all the technicians, please, on stage, and the rest of our fantastic cast: Kanika, Rohan, Aditya, Manik, Poojan. Please come on stage for one photo with us, please. Sorry, I can't see everyone here. Please, can we have you all on stage? Yeah, they're coming, yes. Subhash ji, Ehsan sir, please can we have you on stage, please? Everyone else, please. I can't see. I'm so sorry. Thank you. Sir, wait, sir. Sir. खाना भी आएगा ये सब खाना
सर आ जाइए। सर लेफ्ट साइड। आपके लेफ्ट पे देखिए सर, यहाँ पे सर 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 यहाँ पे तो देर तक क्या किया तू? ये भाई रोशन एक बार हो गया ना। सर वेट सर। सर लेफ्ट साइड। वेट लेफ्ट साइड राइट साइड रोज वेट कौन है मालूम यार मार के रखने का भाई फिर वही मांगते हैं ऑफिस वाले। अरे वो आया था हाथ पीछे करो रवि भाई। वो रईस भाई अरे भाई मेरे आगे रवि भाई हाथ पीछे करो। अरे मेरे आगे भी तो देख क्या है। फर्स्ट मार्क पे रुको। आओ दोनों सेंटर में सेंटर में लेफ्ट में सेकंड मांगू आने दे। लेफ्ट सामने आप दोनों का लेफ्ट में चल लेफ्ट में लेफ्ट मैम लेफ्ट सर लेफ्ट में लेफ्ट मैडम लेफ्ट सोलो कौन चलता है? लेफ्ट टर्न लेफ्ट अच्छा चेंज
यहाँ पे आइए सर डैडी अरे रुको बे चलिए सेंटर में देखिए सेंटर में देखो फोटो पहले निशाना निकालते हो बस पहले लेफ्ट लेफ्ट सर लेफ्ट लोग को नहीं पता कैसा खड़ा करने का है सब आ जाओ भाई एक साथ ये लोग कंफ्यूज है अरे कंफ्यूज नका हो रे यार तेरा कलमा सर्वाना साथ में आइए सब साथ में आइए कुछ कंफ्यूज है लोग कैसा करने का स्मार्ट पे सब साथ में फोटो ग्रुप फोटो Look center. Look center. Look center. Right to the gate. Nice look. Nice look. Center look. Right नहीं. Sir. ये फोटो पर भी होना. इसके चक्कर खट्टे सर यहाँ पे प्राची मांगे प्राची अरे प्राची आ गए क्या हो यार आगे प्राची सर रोड सर सेंटर सर साथ में करते हैं सोलो नहीं देगा रे रुक भाई सेंटर हाँ सोलो फर्स्ट मार्क से सर
नहीं देंगे ये रहे राइट सेंटर में राइट में देखिए राइट 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 कॉर्नर राइट कॉर्नर चलो बाइक आप सर आइए ना सर आइए आइए सर आप सेंटर में आइए सेंटर में हाँ ये हाँ ये क्या बात है ये नाइस सर राइट में देखिए राइट में सर सामने सर सर अकरम पीछे में कौन राजवीर सामने सर होल्ड होल्ड सर होल्ड सर होल्ड सर होल्ड सर होल्ड सर होल्ड 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 सर होल्ड सर होल्ड ठीक है सर होल्ड सर होल्ड डन राजवीर सर सोलो दीजिए ना आपका सर आपका भी आपका करम भाई नो मत ना इतना कितना ही चलेगा सर इधर देखो ना सर सर सामने देखिए बिल्कुल आपके सर अभी आपका सोलो सर आपका सोलो सर अरे हिलो मत सर आपका सोलो 1 सेकंड लगेगा सर 1 सेकंड लगेगा सर सर 500 करोड़ सर इधर सर ये सर सामने बिल्कुल थैंक यू सो मच चला अरे बैठ नहीं यार बैठ अरे दीपक लाइट भाई भी जाएगा अरे यार रवि बाहर ना लाइट चालू कर दीपक लाइट लगा ब्राइटनेस कर फोटो अच्छा पीछे रवि भाई पीछे चलो ना आ रही है वो हां पता अरे पहले का मार और पूनम जी राइट सेंटर राइट सेंटर सेंटर सेकंड मार्क रेस मागे थोडासा मागे आलो तसा सर इधर सामने देखिए पूनम मैम आ रहे उधर पूनम जी इधर आइए पूनम जी आइए मैम इधर आइए मैम पूनम जी आइए ना अरे ओ सोहेल भाई वो देख सोहेल भाई इंटरव्यू कर रहे हैं यार क्या कर रही है
नहीं है भाई। मैम इधर आ जाओ मैम, फोटो बाकी है। ए सोहेल भाई, साला ये छपेगा आदमी। हीरो जो चले गए भाई उसका। चलो मैम, लुक सेंटर सेंटर, फोटो सेंटर। सामने सामने मैडम जी इधर। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा जैसे बाबा मैडम इधर देखिए। ये लुक सेंटर सेंटर। आइए लुक एट दिस कैमरा। पूनम मैम आइए मैम। पूनम जी आने दे, इधर आने दे। ये आने दे पलोमा रुको। ना ये फोटो आप इधर। अरे पैसा नहीं है। अच्छा लाइट। अरे रुकना भाई, हीरो बन रहा है फालतू में। नाइस। पलोमा सेंटर 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 सेंटर। पूनम मैम सेंटर, पूनम मैम। ए तू अभी आया, रुक। मैडम उधर सामने देखेंगे। लोग सेंटर सेंटर सेंटर। लोग सेंटर। थैंक यू। वेट। क्या चाहिए? चलो कौन आया? थैंक यू। अजून बाकी सनी फॅमिली येणार आहे. अरे ते आले. आले. बरं ऐका तरी झाला, दोन बोलते मी काय तुला बोलू 500 मी काय घेऊ बरं. ते 5 रुपये त्याच्यावर. मनवा यहाँ पे रुको भाई। बहुत हार्ड है क्या? थैंक यू। रुक नहीं है भाई। सर सामने देखें इधर। लुक सेंटर सर यहाँ से ले। यस भाई है भाई। यही है आपका कैमरा। सर सेंटर ये वाला सेंटर सर सामने यहाँ पर। सर इधर सामने देखिए सेंटर में। भाई इधर देखना भाई। सर सामने इधर राइट। मैडम इधर। भाई यहाँ पे कौन और कौन? अरे आइए सर एक साथ में करते ना सर। पापा राजी 72। सर इधर सामने देखिए, सेंटर में हाँ। लोग सेंटर सर सामने। सर इधर सर राइट सेंटर में। सर राइट सामने देखिए। राइट यस सर सेंटर में देखिए ना। अरे ये रुकना लिफ्ट। थँक यू। या सब ऊपर जा। वो भी आ गए। ये भी है क्या? मैम व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे नहीं। एक मिनट। अरे नहीं ये मैम सेंटर में रुको। सेंटर मैम लुक हियर। मैडम नाव क्या है? मैडम इधर सामने देखो। लोग सेंटर मैडम जी। यहाँ देख लो। हाँ सामने मैडम इधर सामने देखो। मैम सेंटर। मैम राइट देखो, राइट जरा। मैम अच्छे मोबाइल। मैडम इधर सामने देखो ना। मैम यहाँ राइट देखिए जरा। महंगे वाले मोबाइल में नहीं, ये सस्ता वाला। थैंक यू। ये भारत थैंक यू। चलो रवि और कौन है? कोई नहीं भाई, चलो ऊपर जाना। चल सेंटर। यहाँ पे भी इधर सेंटर में देखो। सेंटर सर यहाँ पे देखिए ना। लोग सेंटर भाई इधर सेंटर में देखो। नहीं तो इसको गुस्सा है क्या? लोग सेंटर हो गया ना। भाई यहाँ पे और है क्या? और है। थोड़ा आगे वन स्टेप आगे थोड़ा आगे और बस। नल्ला लाइट राजवीर कोई अच्छा पोज दे दो। रोमांटिक पिक्चर वाला। तुम्हारा पोज दो।
सर थोड़ा सा आगे आइए ना, वन स्टेप और आगे आइए, और आगे, वो पूरा कटआउट नहीं मिलेगा। Yeah. पटक उसके निकले हीरो। सर 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 थोड़ा वन स्टेप आगे, थोड़ा आगे आइए। सर वन स्टेप आगे, आगे आगे राइट घुमाना यार, गिरा पीछे गिरा पोज। ये यार राइट ही नहीं। उषा उषा जी वो लाइट जरा घुमाइए ना उधर, वो लाइट। सनी सर साथ में सनी सर, आइए साथ में सर, थोड़ा आगे 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 आगे, हाँ बस परफेक्ट। आइए आइए लोग सेंटर, अरे अरे भाई बड़ी करण करण वायरल भाई हाँ ये हुआ ना। सर 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 तीनों का सर सर आप करण और राजवीर और सर आप सेंटर में सर थोड़ा थोड़ा चलो हाँ